No. Assalamu alaikum, sir. I- Yesterday we have stopped where uh, I think harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन Okay. और क्या बोलते हैं उसको लैपलेस का आप Okay. वो लिखा है हार्मोनिक फंक्शन So here one question I will take. Uh, Suppose that if u is equals to e power x cos y, then show that u is harmonic. U is harmonic. And today we can discuss about the construction part also. No solution. यस Here our given u value is equal to e power x cos y. Now, what is the definition of what do you say? What is the definition of harmonic function? We have to find out this value two times partially with respect to x. First इफ one, इट्स हाँ पार्शियली dou u by dou x. With respect to x, we will get यू बाय derivative of e power x is e power x only, and then cos y as it यस is. One more time, that is dou square u by dou x square. If you do it one more time also, e power x is e power x only. Again, cos y as it is. Now, same thing, this value of u we have to differentiate partially with respect to y, which is also equal to, you can see e power x is a constant this case. Okay, e power x is a यस constant this case. Cos y is nothing but minus sin y. साइन बाय If you want to do it one more time, that is dou square u by dou y square, which is also equal to, with respect to y one more time, minus must be there, e power x must be there, sin y derivative is cos y. Now, if you add these values, therefore, dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square. If you are doing this one and if you are adding this one, e power x cos y, and then minus e power x cos y. Now, if you notice, obviously these two are cancelled. We get it, our answer is 0. Therefore, we say u is harmonic. U is harmonic. Like that, this concept of harmonic function and the function of analytic function concept, what we have discussed yesterday, that is, we have to do it some other type of question in the same concept. This is fourth unit only, we are continuing. The important concept is construction of analytic function. Very, very important. This one we have to discuss today. ओके सर Construction. Compulsory question will come for this. Construction of analytic function. How to construct the analytic function? Analytic function. Construction of analytic function. So there are two cases here. When u is given, how to construct, where v is given, how to construct. So I will put a heading here is if u is given, that is what do you mean by u is given? Rp is given, real part is given, real part is denoted by u. So for that one, we have to see what is our working rule for this. Working rule when real part is given. Now, step number 1, write u and find
write u and find dou u by dou x and dou u by dou y. This is step number 1. Step number 2, put x is equal to z and y is equal to 0 in dou u by dou x and dou u by dou y. Put x is equal to 0, x is equal to z and y is equal to 0 in dou u by dou x and dou u by dou y. This is the third step. We have to construct f of z value now. This step is important. Important step. F of z is equal to, this is integral over c dou u by dou x at the point z comma 0 dz. Okay. And then in this, which part we are doing? We are doing, this is the real part, minus I integral over c dou u by dou y at the point, same thing, z comma 0 dz, and then construction part, that is plus c, because we are integrating. This is the concept when u is given. This is next we have when, what is the next side heading? When, come on, when When v when is u given. is When v v is is given. given, second part, if v is given, v is given, this is your second case. The meaning of this is when IP, imaginary part is given. When imaginary part is given. For this one, what is the working rule? We have two different ways for finding the solution. चलेगा? 5 बजे सवा से बात बुक कर रहे थे, कैंसिल है, बुक करते जा रहे कैंसिल अब कहीं के मैं बेवकूफ के सब 4:30 से बैठे हूँ 5 बजे यार. यस, वर्किंग रूल स्टेप नंबर 1. बैठ के कल के क्वेश्चन आता है. राइट v and find dou v by dou y. पहले विद रेस्पेक्ट टू y करना है एंड dou v by dou x. Then second step, second step is a common step. Put x is equal to z and y is equal to 0 in dou v by dou y and dou v by dou x. Little reverse part. With respect to y, we have to do it first. And now, third step, which is again important step, we have to construct our f of z value. Third step, f of z is equal to, it is integral over c with respect to y first of all, dou v by dou y. The point is z comma 0. dz. And instead of minus, we have plus integral over c dou v by dou x at the point z comma 0 dz plus c. This is the working rule. Just एक बार पढ़ लीजिए आप working rule.
ओके, एक बार पढ़ लो आप। Yes, 1 sir. minute आई विल गिव यू। जब u गिवन रहता तो अपन माइनस लेते थर्ड उसमें, और जब v गिवन रहता तो अपन प्लस लेते। u को डिफरेंशिएट करेंगे। सर हेलो, पेन नहीं लेके ले लेके। हेलो, पढ़ लिया आप कंस्ट्रक्शंस का? यस सर। ओके, so we can verify our question. This is one example I will give you. If I am taking this is our u value, I can show that v value. I can find out the v value with the help of u value by using the construction function. And the second way, we can take that v value and we can show the same u value. मैं करके बताता हूँ. Next page. The question is, if u is equals to, like previous question only, if u is equals to e power x cos y, then find f of z. मीन्स कंस्ट्रक्शन करना है f of z को. अब आपको समझ में आ रहा क्वेश्चन? f of z मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हाफ पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पूरे का पूरा पार्ट आपको फाइंड आउट करना. गेटिंग और नॉट? यस सर। Getting, yes. Solution. So we have to follow the working rule. The working rule says that we have to write down the value of u and we have to find out dou u by dou x and dou u by dou y, and then put x is equal to z, y is equal to 0, and dou u by dou x and dou u by dou y. Finally, this is the formula to find out the f of z value. So very simple way we can move on. So we write that given u is equal to
e power x cos y. E power x cos y. This is u value. Find out dou u by dou x. Differentiation of u partially with respect to just now we have done. It is e power x only, cos y as it is. Okay, comma. Yes, sir. Dou u by dou y, partial differentiation with respect to y. It is also equal to minus e power x sin y. Cos y derivative is sin y. So then first step is over. What we have to do it, second step is we have to put x is equal to z and y is equal to 0 in equation number in this. So z comma 0. Z comma 0 means in place of x we are putting x, in place of y we are putting 0. What is your answer? Tell me. In place of x if you put z, it is we are getting e power z into E cos 0. power z Cos 0. cos So 0. we know that cos 0 value is 1. So it is Yes. equal to e power z only. Same thing, we have to find out dou u by dou y value at the same point. The same point is z comma 0 only. Again, we need to put in place of x is z, in place of y is 0. We get our answer is minus e power z into sine 0. But we know that sine 0 value is 0. 0 into anything is 0. So entire value will become 0. Got it? Yes, sir. Now, f of z we have to construct. Construction of f of z. What is the formula? Very famous, very important, very useful formula. This is f of z is equal to get the f of z, the formula is here is integral over c. It is what? Dou u by dou x Do at the you point by z comma 0 dz z comma minus I into integral over c dou u by dou y at the point z comma 0 dz and then plus c. So plug in all the values in this formula. Just plug in. This is equal to f of z is equal to integral over c dou u by dou x at z comma 0. We get our answer is e power z only dz. And now dou u by dou y value is 0. So we need not to go for this part. Now integration of e power z is e power z only plus c. So we got it our f of z value. So one part of actually question is over. ये question complete हो गया है यहाँ पर. अब अपन क्या करेंगे? ये question को थोड़ा extra करेंगे. क्या करेंगे? We take this f of z value and find out its imaginary part. Okay? This is our extra work. मतलब yes, sir. मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए. If f of z is equal to e power z, don't add the constant, find v value. Find v value. मतलब imaginary part. तो वो कैसा करेंगे? So we know that f of z is equal to e power z. E power z. This is equal to e power z value is a complex number, means x plus iy form. We can also write this one as e power x into e power iy. Bases are equal, power should be added. Okay, this one I will continue here. So now f of z is equal to e power x into e power iy. If you remember your paper 2A intermediate, e power I theta, De Moivre's theorem, intermediate second year, cos theta plus I sin theta. Have you remembered that?
याद है कि नहीं याद है? पढ़े थे शायद सर। हाँ, तो ई पावर आई थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन यूज करने वाले हैं ई पावर आई बाई में। तो व्हेन आई एम यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, दिस इज e power iy can be written as cos y plus I sin y. Am I correct here? Cos y plus यस I सर। sin y. So this f of z is equal to, if we multiply, we get e power x cos y, e power x cos y plus I into e power x sin y, e power x sin y. Now if we compare, we got it our answer. You can see f of z is equal to, it is which form is this? U plus IV form. अब आप नोटिस कर लीजिए, देख लीजिए अपना u यही से देखिए, तो अपना v मिल गया। देयरफॉर v इज इक्वल टू e पावर x sin, मिल गया ना v वैल्यू। देयरफॉर यस सर। v इज इक्वल टू e पावर x sin। अब अपन एक और काम भी एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, क्या करके, अगर अपन इमेजिनरी पार्ट e पावर x sin y लिए, तो इसका जो f ऑफ z है फिर यही आंसर आता, वो भी करके बताता हूँ मैं आपको। देख लीजिए, अपन क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं वो देख लीजिए। इफ ये अलग और एक अलग क्वेश्चन होता, इफ v इज इक्वल टू e पावर x sin y, फाइंड f ऑफ z, फाइंड एफ ऑफ, एक ही क्वेश्चन असल में अपन कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एफ ऑफ जेड है, जेड नहीं, सॉरी, इट इज एफ ऑफ जेड। तो अगेन हाउ टू स्टार्ट अवर वर्क, सेम वे मीन्स व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट डो वी बाई डो वाई पहले करना पड़ेगा, है ना। देखिए वर्किंग रूल, देखिए वर्किंग रूल, विथ रेस्पेक्ट टू वाई पहले करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को बाद में करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई यस सर। मीन्स ई पावर एक्स साइन वाई डेरिवेटिव इज कॉस वन, कॉमा, this one we have to differentiate with respect to x now, we get it e power x only, sin y as it is in this case. Now we have to find out dou v by dou y value at the point z comma 0, the point z comma 0 in place of x and in place of y. So we get e power z, and cos 0 is 1, we no need to write that one, this one with respect to x, and the same point we have to put x z comma 0, x के place पे e power z होता, sin 0 0, so answer is 0. Now construction of analytic function से f of z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, f of z is equal to, can you tell me that, integral over c dou u by dou y पहले करते हैं अपन, डो है ना, यू बाई डो वाई जेड जीरो z comma डी 0 जेड प्लस आई dz plus I इंटीग्रल integral ओवर over सी dou v by डो वी बाई डो एक्स dou x at the point जेड कॉमा जीरो z comma 0 dz. डी जेड प्लस सी। Yeah, but finally if you put this value, यहाँ पर थोड़ा स्पेस का मसला है, आप चाहे तो यहीं पे मैं बता दूंगा। अब देखिए, डो यू बाई डो वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आई, ई पावर जेड आई, ई पावर जेड का इंटीग्रेशन करे तो क्या होता, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर जेड ओनली ना, यस सर। प्लस कांस्टेंट। देख लीजिए, अगेन यही आंसर आया, मतलब क्या, u लेके v फाइंड आउट कर सकते हैं, v लेके u फाइंड आउट कर सकते हैं, u से जो एफ ऑफ जेड आया, v से जो एफ ऑफ जेड आया, वो सेम ही होता। ओके, तो यस एक सर। क्वेश्चन में अपन और एक ये क्वेश्चन कैसा वे में पूछ सकता, इफ u इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई देन फाइंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका मतलब आपसे उन्हें v की वैल्यू को पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, u is a complex conjugate of v is a complex conjugate of v, u u लेके v फाइंड आउट कर सकते, u क्या होता, v का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता, v लेके u को भी फाइंड आउट कर सकते, v इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ u। तो इस तरह से अपन कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। u है तो v, v है तो u, दोनों है तो f ऑफ जेड है तो स्प्लिट, स्प्लिट है तो ऐड, कितना बोले वैसे टॉपिक को अपन इसको मैजिक से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास,
पहले तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर भी डाउट है तो मुझे बोलिए। नहीं ठीक सर, है, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो फिर अपन इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा जाएंगे अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताना है आपको वो है कोचीज थ्योरम। कोचीज थ्योरम प्रॉब्लम जो है ना, अपन मिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। मतलब अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं ये उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो जब बुक मेरे पास रहेगी तो मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करूंगा। कोचीज थ्योरम क्या बोल रहा है देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है। व्हाट द साइंटिस्ट वांटेड टू शो, स्टेटमेंट। यस सर। अपन लिखेंगे लेट f of z be analytic function, analytic analytic function, let f of z be analytic function within within and and on the closed closed curve C. Then integral over C f of z dz is equal to 0. I will tell you the meaning of this. For example, just we take a circle here. यहाँ पर एक सर्किल ले ले रहा हूँ मैं, राइट। f of z क्या हो रहा, f of z इज एनालिटिक फंक्शन इन दिस क्लोज्ड कर्व C। ये क्लोज्ड कर्व C में हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है विद इन द कर्व सी एंड ऑन द क्लोज कर्व सी। अगर वो पॉइंट्स अगर इसके बाउंड्रीज पर भी है तो उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन क्या हो रहा, एनालिटिक हो रहा। तो ऐसे केस में जब भी आप ये कर्व के अराउंड ये एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड, यहाँ पर कोई भी पॉइंट को आप ले लीजिए, फंक्शन एनालिटिक हो रहा है। इसका मतलब क्या, कोचीज रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। एनालिटिक का यस डेफिनेशन सर। क्या है, एनालिटिक का डेफिनेशन क्या है, इट्स सेटिस्फाइंग द कोचीज रेमन इक्वेशन लाइक दैट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कोचीज थ्योरम। इससे थोड़ा हटके अगर अपन बात करेंगे, इसका जो इसका एक रिलेटेड थ्योरम है, बट ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ नाम ही सेम है। आई विल शो यू दैट। दिस इज कॉल्ड कोचीज इंटीग्रल फार्मूला। हैव यू लिसन, हैव यू हर्ड दिस वर्ड्स, इससे पहले कभी सुने क्या, कोचीज, जितने भी चीजें मैं बता पढ़ा रहा है हूँ। सर मैम। कोचीज इंटीग्रल फार्मूला, ये जो क्लास कनेक्ट हो रही है अपनी पिछले क्लासेस से, पहले अपन क्या पढ़े फर्स्ट क्लास में, एनालिटिक फंक्शन पढ़े, हार्मोनिक फंक्शन पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़े, फिर आगे चल के अपन कोचीज इंटीग्रल फार्मूला और कोचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या है वो देख रहे हो। तो अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट, बिकॉज एग्जाम में प्रूफ तो अपने पास इंपॉर्टेंट है नहीं और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बट स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछ सकता, 2 मार्क्स के लिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता देख लीजिए एक बार। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक एनालिटिक function on the closed curve C, on the closed curve C, and let let small a be any point, let small a be any point within C, within C, then integral over C f of z by
z minus a dz, z minus a dz is equal to 2 pi I into the value of f of z at z is equal to a. क्या मतलब है? Let us conclude the meaning of this theorem. ये theorem का क्या मतलब है? What is the meaning? का मीनिंग क्या है देखिए, फिर से वही है काम आपका, एक सर्कल, फिर एक और सर्किल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, try to understand the meaning of this theorem. Here you see f of z is analytic in this closed curve C. यहाँ के हर एक पॉइंट पर और बाउंड्री पर भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, मगर एक पॉइंट आपको सर्किल के अंदर ऐसा मिल रहा जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में भी हो सकता, कहीं कॉर्नर पर भी हो सकता। यहाँ पर ये पूरे हर जगह फंक्शन क्या है, हर जगह फंक्शन क्या है बोलिए, एनालिटिक है। बट ये पॉइंट जो एनालिटिक है। सर्किल के अंदर ही से, वो पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना? ओके। वो एक पॉइंट, यस ऐसा सर। पॉइंट आपको मिला नेग्लिजिबल रेडियस का, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, नेग्लिजिबल रेडियस का ये पॉइंट सर्किल का फॉर्मूला मालूम है ना, पॉइंट सर्किल मीन्स ए सर्किल ऑफ रेडियस 0। तो एक पॉइंट सर्किल मिला समझिए, एक ऐसा पॉइंट मिला जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये अगर हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जा रही है। अगर एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा है जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फिर कोचीज इंटीग्रल फार्मूला बन जाता थ्योरम जाके। तो वो फार्मूला वो पॉइंट के ऊपर डिसाइड करके, ये पॉइंट के ऊपर डिसाइड करके इसकी एनालिटिसिटी को चेक करते हैं। f integral over c f of z by z minus a dz, where this a point is called a point where the function is not analytic, and उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 2 pi I into the value of f of z at z is equal to a। तो ये पॉइंट के बारे में अपने अगली क्लासेस में बात करना है, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड, क्या बोलेंगे और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पूरे चीजें अपने को अगले सेशन में देखेंगे। तो आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। आप जरा देख लीजिए अच्छे से। अब आप अगली क्लासेस हम करने वाले हैं जिसके ऊपर अपन जो प्रॉब्लम करेंगे वो कंटिन्यूएशन यहाँ से रहेगा। ये पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। नेग्लिजिबल। ये पॉइंट को अपन बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। सिंपल इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है? यस सर। तो इसका जो कंटिन्यूएशन रहेगा मैं यहाँ पर लिख के स्टॉप कर दे रहा हूँ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट से अपनी अगली क्लास कंटिन्यू होती है। अब कितने पॉइंट्स के सिंगुलरिटीज है, फिर आप उसको कैसा रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो वो कैटेगरीज को अपन देखेंगे। फिर उसके बेस पे एक नया थ्योरम आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। फिर रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूले के ऊपर और कॉचीज थ्योरम के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन देखना है आप। तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कंटिन्यूएशन चलेगा, इंशाल्लाह विल बी नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो मैं आज की ओके क्लास सर। को यहीं पे इंक्लूड कंक्लूड कर दे रहा हूँ। थैंक यू ओके, सर। ओके, थैंक यू।